Bernoulli trails and Bernoulli distribution. Bernoulli trails. Many experiments are dichotomous in nature. In tossing a coin, if occurrence of the head and considered a success, then occurrence of tails is a failure. ठीक है. Each time we toss a coin or roll a die or perform any other experiment, we call it a trial. The outcome of any trial is independent of the outcome of other trial. In each of the trials, the probability of success or a failure remains constant. Such independent trials, which have only two outcomes, usually regarded as a success or failure, is called Bernoulli trials. डेफिनेशन 8 देखते हैं. ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग condition. There should be a finite of trails. The trails should be independent. Each trail has exactly two outcomes, success or failure. Probability of success remains the same on each trial. Bernoulli distribution. Consider the experiment of tossing a coin with each of the trials result in success, say head, or failure trails. S से success, F से failure. Find the success in 3 trials. If बन गया. फाइंड 2 ट्रायल्स, 2 सक्सेस एंड 4 फेलियर. 2 सक्सेस और 2 फेलियर, तो इतना आ जाएगा. इसका परमिटेशन लगा देंगे. नेक्स्ट है, it may be lengthy and time consuming. For probability of the number of success and Bernoulli trails, a formula is derived. Bernoulli trails with possible probabilities of P, A, Q1 for success and failure respectively in each trial. Say toss a 3 coins 3 times, draw a coin 3 times, success or failure. यहाँ पे number of success of a random variable can take the value 0, 1, 2, 3 and Q. P of x, number of success, P of x1 1 success, 2 success, P of 3 success के लिए. probability distribution of x यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है. एन सी आर क्यू एन माइनस आर पी ऑफ आर. यहाँ पे ये लगाएंगे x1 और r1 के लिए, x2 और r2 के लिए, इस तरीके से. Also, the Bernoulli expandation of PQ plus PQ is 3p. ऐसे ये लगा रहे हैं बर्नौली ट्रेल्स. यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं. ऑल्सो सिंस PQ plus 1 equal to 1, follow the sum of the 3 probabilities. Thus, the probability distribution of the number of success in the experiment constituting the Bernoulli trails may be obtained in the Bernoulli expansion Q plus P, and the distribution of the number of success x is written as n c q n p minus n q n p n ऐसे करके. The above probability distribution is known as Bernoulli distribution with parameters of n p. Because given value of n and p, we can find the compute the probability distribution. May denote as p of x is equal to x is also denote as p of x and is given by p of इतना. The p of x is called a probability function of the Bernoulli distribution. हो गया ये ख़त्म. ठीक है. तो ये था प्रोबेबिलिटी. ये कुछ बड़ा चैप्टर था प्रोबेबिलिटी का. नोट्स जो था ये पूरा फिनिश हो चुका है. सो आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखते हैं क्या शुरू करने वाले हैं. अभी ये प्रोबेबिलिटी और जो कि 12th का मैथ था नोट्स, वो पूरा ख़त्म हो चुका है. तो आई होप आप इसकी नोट्स बना रहे होगे, और नहीं बना रहे हो तो बनाना शुरू कर दो. ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी.